This class we will discuss explanation of Faraday's first law and what is Faraday's second law. Clear? So I am writing the explanation. How you will write? First law what कहला? The mass of the substance deposited or liberated at the electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution. कोल्टे लाइन हमें कहियो कहला जदि हायर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करिबा कैथोड और एनोड रे हायर मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट हो जदि लो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करिबा तले लोअर मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट हो कोथरे कैथोड और एनोड क्लियर सो चले बा हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस यू राइट दिस एक्सप्लेनेशन अदरवाइज मार्क विल बी डिडक्टेड very clear so if you write these things then nobody will dare to cut off your marks in the exam clear so explanation of first law explanation of first law explanation of first law let capital W be let capital W be the mass of the substance let capital W be the let capital W be the mass of the substance deposited or liberated. Let capital W be the mass of the substance deposited or liberated at the electrode. Let capital W be the mass of the substance deposited or liberated at the electrode. And let Q will be the quantity of let Q will be the quantity of electricity passed through the electrolytic solution. Listen. So here W be the mass of the substance deposited or liberated at the electron. Q वाला quantity of electricity pass करे. Q quantity of electricity हमें Q quantity of electricity pass करिवा electrolytic solution को कितने ग्राम कितने deposit होगा W gram mass of the substance deposited at the anode of cathode. So according to Faraday first law कौन करेगा? According to first law W directly proportional to Q. Look at W directly proportional to Q. So हमें कहले यदि higher mass of Q pass करिवा तले higher W deposit होगा यदि lower mass of Q low quantity of Q higher quantity of Q pass कले higher mass of W deposit होगा low quantity of Q pass कले lower mass of deposit होगा so high quantity of electricity pass कले higher mass deposit होगा electrode रे low quantity of electricity pass कले lower mass deposit होगा electrode so if W is the mass of the substance deposited or liberated at the electrode Q is the quantity of electricity then according to first law W directly proportional to Q or W equal to ZQ or W equal to ZIT. This is the equation number 1. So this is the derivation for first law of electricity. So what is Z? Z is electrochemical equivalent. Where Z is called Z, where Z is
electrochemical equivalent, where Z is electrochemical equivalent, I current in ampere, I is current in ampere, T is time in second. So that is very important because Q equal to IT, Q equal to I into T, Q equal to I into T. So 1 coulomb equal to 1 ampere into 1 second. Q is measured in coulomb, so that unit will be coulomb. So 1 coulomb equal to 1 ampere into 1 second. We can say that 1 coulomb equal to 1 ampere into 1 second. You will not write that in the explanation, and for your understanding I am giving you this. You will not write this part, the bracketed part. You will not write this. 1 coulomb, Q equal to IT, 1 coulomb equal to 1 ampere into 1 second. This is very important. Coulomb equal to 1 ampere into 1 second. You will put the short question or 1 mark question. 1 coulomb equal to dash into 1 second. That is 1 coulomb equal to 1 ampere into 1 second. Here. So Q equal to IT. This formula is also required to solve the 1 mark question. This formula you should remember. So W equal to ZIT. This bracketed part you will not write in the explanation. So explanation part you will write in this way. First you will write let W be the mass of the substance deposited or liberated at the electron. W mass of substance टा deposit होगा कुछ electron रे जल्दी हमें Q quantity of electricity pass करेगा. Simple one line. W mass of substance टा deposit होगा electron रे जल्दी हमें Q quantity of electricity pass करेगा electrolytic solution. जदि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को Q क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करबा त W मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट होबो कोथरे इलेक्ट्रॉन. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नो W डायरेक्शन ऑफ Q, W इक्वल टू ZQ, W इक्वल टू ZIT. W इक्वल टू ZIT. व्हाट इज Z? Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. Z is electrochemical equivalent. Next, after this we will write. Sorry, I don't leave this. I am writing this, erasing this. If I equal to 1 ampere, T equal to 1 second. I equal to 1 ampere, T equal to 1 second, then what will happen? W equal to Z. If I equal to 1 ampere and T equal to 1 second, then W equal to Z. So Z, see from this you can define the Z. You can define Z from this equation. W equal to Z. So electrochemical equivalent of a substance is defined as the mass of the substance deposited or liberated at the electron when we pass I equal to 1 ampere and T equal to 1 second. That is when we pass electricity for 1 ampere of electricity for 1 second, or when we pass 1 coulomb of electricity. Very simple line. So I am writing the definition. You will put the definition. What is electrochemical equivalent? Short question. One more question. Electrochemical equivalent of a substance. Electrochemical equivalent of a substance. Electrochemical equivalent of a substance is electrochemical equivalent of a substance is defined as the mass of the substance deposited or liberated at the electron when we pass 1 coulomb
1 coulomb of electricity to the electrolytic solution. Electrolytic solution. Clear? Or electrochemical equivalent of a substance is defined as the mass of the substance deposited or liberated at the electrode when we pass 1 coulomb of electricity. Up to this also you can write also. To the electrolytic solution you may write or may not. You may write this or you may not. Up to this you will write. This is the definition of what is Z? Z is electrochemical equivalent, that is a constant. Z is an electrochemical equivalent and it is a constant. Electrochemical equivalent of a substance is defined as the mass of the substance deposited or liberated at the electrode when we pass 1 coulomb of electricity. When we pass 1 coulomb of electricity. W directly equal to Q, W equal to ZQ, W equal to Q equal to, we know that Q equal to IT, so W equal to ZIT, where I equal to 1 ampere, T equal to 1 second, so W equal to Z. When we pass 1 coulomb of electricity, 1 coulomb of electricity is how much? 1 ampere into 1 second. When we pass 1 ampere of current for 1 second, then W equal to Z. When we pass 1 ampere of current for 1 second to the electrolytic solution, that is, we can say that 1 coulomb of electricity. So how much mass of the substance deposited? W mass of the substance deposited. W mass of the substance deposited. So we can define electrochemical equivalent of a substance is defined as the mass of the substance deposited or liberated at the electrode when we pass 1 coulomb of जेतेबेले 1 coulomb रो इलेक्ट्रिसिटी हमें जेतेबेले 1 coulomb रो इलेक्ट्रिसिटी हमें पास करबा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को W ग्राम मास ऑफ द सब्सटेंस इलेक्ट्रोड रे डिपॉजिट हो हैला. So when 1 जेतेबेले 1 ampere of current 1 सेकंड पई गोटे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हमें पास करले W ग्राम मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट हबो सेटा को कोन कहै जबो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. क्लियर? So this is all the Faraday first law of electrolysis. Next I will explain the second law of electrolysis. Clear? So next part, Faraday's second law of electrolysis. Faraday's law of electrolysis. This is second law. First law we have discussed. Next is second law. Second law states that when same quantity of electricity is passed through the different electrolyte connected in series, then the mass of the different substance deposited or liberated in the electrode is directly proportional to their equivalent masses. Look at एटी कोन कहला सेटी कोन दिला W directly proportional to Q. जति if we pass high quantity of electricity to W mass of the substance will be deposited at the electrode. जति अधिक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करिवा ताले अधिक मास रो डिपॉजिट होबो. जति कम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करिवा कम मास रो डिपॉजिट होबो. एट सेटी कोन कहला if we pass Q quantity of electricity through the electrolytic solution, then W mass of the substance will be deposited. So statement कर दिया the mass of the substance deposited or liberated in the electrode is directly proportional to the quantity of electrolytic solution to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution. W ग्राम रो मास का डिपॉजिट हो इलेक्ट्रोड रे जदी Q क्वांटिटी रो इलेक्ट्रिसिटी हमें पास करिवा हला. जदी अधिक क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी पास करिवा अधिक मास डिपॉजिट हो. कम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी पास करिवा कम मास रो डिपॉजिट हो. तेणु W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. सो Q यदि अधिक हो W अधिक हो Q कम है W कम बिकॉज़ W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. एठी सेकंड प्रिंसिपल अप्लाई करबा खाली स्लाइड डिफरेंट है. एठी कोन होला इट स्टेट दैट व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट. एठी हमें तीनटा इलेक्ट्रोलाइट मिले गोटला AgNO3 सॉल्यूशन आउटला कपर सल्फेट सॉल्यूशन आउटला H2SO4 सॉल्यूशन. एठी होला AgNO3 सॉल्यूशन एठी होला कपर सल्फेट सॉल्यूशन एठी कोन H2SO4 सॉल्यूशन. मन रखो एठी AgNO3 सॉल्यूशन एठी कपर सल्फेट सॉल्यूशन एठी H2SO4 सॉल्यूशन. वर्तमान तीनटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नै गले ताकू कनेक्टेड कर देले सीरीज ताकू सीरीज एटा पॉजिटिव टर्मिनल एटा नेगेटिव टर्मिनल.
ए तीनटा को कनेक्ट कर दले सीरीज कनेक्ट करके सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर देखो वेरी इंपोर्टेंट तीनटा एटी AgNO3 सॉल्यूशन नेले एटी कॉपर सल्फेट नेले एटी H2SO4 नेले दुईटा को कनेक्टेड कर दले सीरीज रे एवं बैटरी को कनेक्ट कर दले एटा पॉजिटिव पोल एटा नेगेटिव पोल देन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करले तीनटा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट बट सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन बर्तन तीनटा इलेक्ट्रोलाइट नेले तीनटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नेले किंतु सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर क्लियर तीनटा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नेले सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करे किंतु तीनटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंसीडर 3 वोल्टामीटर्स कंटेनिंग सॉल्यूशन एटी तीनटा वोल्टामीटर नेले सॉल्यूशन कोन अछि गुटाला सिल्वर नाइट्रेट आउला कॉपर सल्फेट आउला H2SO4 मतलब ए तीनटा को कनेक्ट कर दले सीरीज रे एवं एटा को बैटरी रे कनेक्ट कर let the 3 voltameter connected in series and same quantity of electricity is passed through the different types of electrolyte solution for a given time गोटे constant time पाई हमें गोटे same quantity suppose q quantity of electricity पे पास कर q quantity suppose गोटे given time रे हमें q quantity of electricity पास करले एते q quantity of electricity पास करले तीनटा वोल्टामीटर अछि तीनटा वोल्टामीटर एटी सॉल्यूशन अछि सिल्वर नाइट्रेट एटी अछि कॉपर सल्फेट एटी अछि सल्फ्यूरिक एसिड क्लियर 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस आर देयर ए जो तीनटा वोल्टामीटर 3 वोल्टामीटर्स कनेक्टेड अछि एटा सीरीज रे कनेक्ट अछि एवं जतो इलेक्ट्रिसिटी बैटरी को कनेक्ट अछि एटा जदि q क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी हमें पास करबा तीनटा इलेक्ट्रोलाइट तीनटा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अछि किंतु सेम क्वांटिटी q क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी पास करबा तीनटा जदियो तीनटा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अछि किंतु हमें सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करले तीनटा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक वोल्टामीटर सॉल्यूशन वोल्टामीटर के कंटेनिंग सॉल्यूशन सेठी कोन होबो गोटे कांस्टेंट टाइम पाई हमें q क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जतले पास करबा से कोन होबो ने the mass of the subq let if q with the quantity of electricity passed to the electrolyte then according to Faraday first law देखो এই পার্টটা যদি তুমি ন পারিব এটা ফর ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং লিখি দেলি যদি কিছু ন পারিব খালি লিখিব এইটু পাখু লিখিব if q is the quantity of electricity passed through the electrolyte if q is the quantity of electricity passed through the electrolyte then according to Faraday first law এইটু পাখু বি লিখিব যদি এই পার্টটা তো ন পারিব ফার্স্ট স্টেটমেন্ট লিখিব এইটা এটি স্টেটমেন্ট লিখিব তারপরে এটি সে কইলা যদি সেম কোয়ান্টিটি অফ ইলেকট্রিসিটি কানেক্ট করালা ডিফারেন্ট ইলেক্ট্রোলাইটিক সলিউশন আছে কি সেম কোয়ান্টিটি অফ ইলেকট্রিসিটি পাস করে সে যে মাসটা ডিপোজিট হবে সেটা হলো ইকুইভ্যালেন্ট মাস ডাইরেক্ট টু শর্ট দ্যাট ইকুইভ্যালেন্ট মাস কোন আসলে ডাইরেক্ট টু শর্ট উদার কর ইকুইভ্যালেন্ট মাস দেখো তুমি এই যদি ফিগারটা জানা পাই প্রত্যেক তিনটা ইলেক্ট্রোলাইটিক সলিউশন নিয়ে আমরা গুটালা সিলভার নাইট্রেট গুটালা কপার সালফেট আর গুটালা কোন H2SO4 সলিউশন बर्तमान एटा सीरीज कनेक्शन बैटरी को कनेक्ट किया मतलब q क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें पास किया q क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इनटू दिस सॉल्यूशन सो सबुतरे q क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी इज फिक्स्ड दैट इज q क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें पास करले एई तीनटा वोल्टमीटर कनेक्टेड है सीरीज रे जेतले q क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करिया अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ केते ग्राम डिपॉजिट हो w डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू q सेही बोलिया जदी तुम एटी किछि न पारिबो खाली स्टेटमेंट फर्स्ट लिखला स्टेटमेंट लिखिसला पर कि कोन कहला when same quantity of electricity is passed through the different electrolyte connected in series then mass of the different substance deposited or liberated in the electrode is directly different from the equivalent mass केते की मास रे डिपॉजिट हो इलेक्ट्रॉन रे ना डायरेक्ट शॉर्ट का सहित इक्विवेलेंट मास सहित डिपॉजिट इक्वल का सहित डिपॉजिट हो इक्विवेलेंट सेठी कोन दिया सेठी जति की हाई क्वांटिटी पास करले हायर मास डिपॉजिट हो लो क्वांटिटी पास करले लोअर मास डिपॉजिट हो एठी कोन डायरेक्ट शॉर्ट द्वारा इक्विवेलेंट मास देखो बता केमती डिराइव होची फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिलो तापर फिगर को जानिया पाई कराइछि जति तो पारिबो लिखिबो नले छाडिबो
तेणु तीनटा वोल्टामीटर नेले सॉल्यूशन तीनटा डिफरेंट सॉल्यूशन नेले सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कले केते मास डिपॉजिट होबो इलेक्ट्रॉन रे ना डायरेक्टली रिलेशन टू देयर इक्विवेलेंट मासेस डायरेक्टली एप्लाई लिखो इफ एट बार लिखो इफ एति जति न पारिबो जे पारिबो सु लिखिबो न पारिबो एटु लिखिबो इफ q is the quantity of electricity passed through the electrolyte if q is the quantity of electricity passed through the electrolyte solutions then according to Faraday first law look at W direct to Q according to first law W direct to Q W equal to ZQ मतलब ये जो Z का W AG by गुणा ना এটা AG नो 3 by W AG equal to ZAG plus ZAG into Q और WC यदि CU by होगा CU ऐसा पर by WCU ZCU Q और H2 ऐसा पर by ना WH2 ZH2 Q मतलब এটা इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 मतलब डिवाइड इक्वेशन 1 by 2 WAG by WCU कितना है ZAGQ ZCUQ ZAGQ ZCUQ Q कैंसिल WAG by WCU equal to ZAG by ZCU ZAG by ZCU এটা को তুমি লিখতে পারো ZAG 96500 coulomb ZCU into 96500 coulomb so Z into etiki Z into 96500 coulomb which is equal to equivalent mass which is equal to kete equivalent mass Z into 965 Z into 965 equal to equivalent mass of AG ZAG into 96500 coulomb equal to equivalent mass of AG ZCU into 96500 coulomb equivalent mass of copper equivalent mass of this is copper so WAG mass of the substance deposited or liberated mass of the substance deposited or liberated mass of the substance deposited mass of the substance that is WCU mass deposited or very simple look at after another time second law कोन कहला जते बेले सेम क्वांटिटी रो इलेक्ट्रिसिटी हमें पास करबा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स थिबो कनेक्टेड इन सीरीज मतलब ए तीनटा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन सीरीज देखो वेरी सिंपल वाटर आंसर कोची सेम क्वांटिटी रो इलेक्ट्रिसिटी हमें पास करबा डिफरेंट AgNO3 गोटे सॉल्यूशन CuSO पर अनदर सॉल्यूशन H2SO पर अनदर सॉल्यूशन तीनटा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अछि एवं तीनटा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्ट हेछि सीरीज रे तो से कनेक्ट हेछि सीरीज रे कनेक्ट हेछि हमें सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करे सेम क्वांटिटी केते q सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें पास करे सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करे कोन हो अकॉर्डिंग टू Faraday's first law of electricity according to Faraday's first law of electricity W direct proportional to Q এটা আমি জানি according to Faraday's first law of electricity W direct proportional to Q যদি কিছু তুমি না পারিবো এইটা भी কিছু লিখিবা নাই খালি স্টেটমেন্ট আপ টু দিস এটি লিখিবো এইটু স্টেটমেন্ট এটি লিখিলা তারপরে ডাইরেক্ট এটি লিখো তাইলা according to first law बस W डायरेक्ट प्रपोर्शनल टू Q এটা যদি পারিবো ভালো কথা বহুত ভালো যদি তুমি যে মানে ন পারিলে সে মানে এটা কিছু লিখবে নাই ডাইরেক্ট লিখ দেবে এইটু লিখবি চল if Q is the quantity of electricity passed through the electrolyte then according to Faraday first law according to Faraday first law W direct proportional to Q W equal to ZQ WAG equal to ZAG into Q WAG equal to ZAG into Q equation 1 WCU equal to ZCU into Q WH2 equal to ZH2Q लगाओ एटा काहे कला W equal to ZQ एटी WH equal to ZHQ WCU equal to ZCUQ WH2 equal to ZH2Q next divide equation 1 by 2
WAG by WCU equal to ZAGQ by ZCU. WAG by WCU equal to ZAG by ZCU, ZAG by ZCU, ZAG into 96500 coulomb divided by ZCU into 96500 coulomb. So ZAG into 96500 coulomb, that is called equivalent mass of Ag, and ZCU into 96500 coulomb, that is called equivalent mass of copper. It has given then WAG called mass of the substance, WAG deposited or liberated, mass of the substance deposited or liberated at the electron. It will be the mass of the substance deposited or liberated at the electron. Clear? Mass of the substance deposited or liberated at the electron, mass of the substance deposited or liberated. It is so mass of the substance, that is mass of the silver deposited divided by mass of the copper deposited. A simple line में लिख पाइयो mass of the silver deposited divided by mass of the copper deposited equal to equal mass of silver equal mass of copper. এটা भी short line में लिख पाइयो पढ़ा mass of the silver deposited divided by mass of the copper deposited equal mass of silver equal mass of copper. Clear? Next again भी जो मैं लिखने को चाहिए a figure up to this you may write or not तुम्हें लिखी बार को लिख तो स्टेटमेंट आगे लिख लो इक्वेशन की तापर if q is the quantity of electricity passed through the electrolytic solution then according to first law equation ये क्या था second law derivation. This is second law derivation. Clear? ये भी आउटपुट के लिख पाइयो मैं यदि एक्स्ट्रा चाहिए যদি এটি চাইবো কোন লিখব দেখো এটা সিম্পল এটা তুমি এইভাবে লিখবে মাস অফ দি আপর লাইন যদি তুমি চাইবো আপরে भी লিখতে দিব মাস অফ দি সিলভার ডিপোজিটেড মাস অফ দি সিলভার ডিপোজিটেড mass of the copper deposited equal to equivalent mass of silver equal mass of silver equal mass of copper और इधर में लिख दिया mass of copper deposited mass of copper deposited divided by mass of H2 liberated equal to equivalent mass of copper divided by equivalent mass of clear mass of the silver deposited divided by mass of the copper deposited equal mass of silver divided by equal mass of copper. Similarly mass of the copper deposited equation 2 by equation 3. Similarly equation 2 by equation 3 will give mass of copper deposited by mass of H2 liberated equal mass of copper equal mass of H2. So this is all about
कौन सेकंड सो सेकंड लो स्टेटमेंट लिखो जदि किछि न परियो इफ q क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द डिफाइंड इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज जदि एकर किछि न परियो देखो जदि तुम एकर शॉर्टकट फिगर किछि न परियो ताले डायरेक्ट कोन लिखिबो स्टेटमेंट आगे लिखलो स्टेटमेंट लिख चलो एटा एक नंबर स्टेटमेंट एति लिखलो दुई नंबर लिखिबो इफ q be the quantity of electricity passed through the electrolytic solutions connected in series, then according to Faraday's first rule देखो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखलो एक नंबर तापर दुई नंबर एटा तापर तीन नंबर 8 तीन नंबर 8 वे तापर चार नंबर 8 हला एटला नो शॉर्ट कर जदि किछि न पाइबो से फिगर किछि करबनी सेठी कोन कहला सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम पास करिबा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट q क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कले q वाला फिक्स्ड क्वांटिटी और सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी तीनटा इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड है सीरीज है तीनटा इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन कोन कनेक्टेड है सीरीज तो सेठी कोन हो if q with the quantity of electricity passed through the electrolytic solution connected in series then according to first law w एटा फर्स्ट एक नंबर एक पॉइंट लिखलो आगे स्टेटमेंट तापर सेकंड एटा लिखलो तापर थर्ड w डायरेक्ट फंक्शन q according to first law w equal to z q एटा फर्स्ट law अनुसार w ag ने गेलो z ag q w cu ने गेलो z cu q w h2 वाला z h2 q let q be the quantity of electricity passed through the electrolytic solution connected in series then according to connected in series if q with the quantity of electricity passed through the different electrolytic solutions that is AgNO3 copper sulfate H2SO connected in series तीनटा इलेक्ट्रोलाइट कोन है सिल्वर नाइट्रेट कॉपर सल्फेट H2SO बर्तन फास्ट स्टेटमेंट चेंज हो गला स्टेटमेंट चेंज होले मार्क मिल गला स्टेटमेंट जहां लिखा है से लिखियो if it states that when same quantity of electricity is passed through the different electrolyte connected in series then the mass of the different substances deposited or liberated in the electrode is directly proportional to their equivalent masses mass of the different substances deposited or liberated at the electrode is directly proportional to their equivalent masses एटा फर्स्ट लिखलो दुई नंबर पॉइंट एटा को लिखो जदि किछि न से फिगर करि पालो भला कथा जदि फिगर न करि पालो दुई नंबर पॉइंट एति लिखो इफ q with the quantity of electricity passed through the different electrolyte solutions that is AgNO3 CuSO4 H2SO4 connected in series then according to Faraday's first law तीन नंबर में एटा 2 एटा 1 एटा 2 तापर तीन नंबर हला according to first law w direct proportional to q w direct proportional to q w equal to zq w ag equal to z agq w cu equal to z cuq w h2 equal to z h2q then dividing equation 1 by 2 w ag by w cu z agq by z ag z cuq w ag by w cu z ag by z cu q q cancel और एटा को हम लिख पे z ag into 96500 कूलम दी जगह कोनी तरह 96500 कूलम so z ag into 96500 coulomb that is equal to mass of ag z cu into 96500 coulomb that is equal to mass of copper so mass of the substance wag deposited or liberated mass of the substance wcu deposited or liberated so এই জিনিস আসলা এর উপর কোন পয়েন্টে লিখতে লিখব আপরে এই লিখতে লিখব mass of the ag deposited by mass of the copper deposited so that is equal to mass of ag equal to mass of this is the derivation up to this similarly equation 2 3 similarly era 1 or 2 is
2 और 3 the mass of the copper deposited by mass of H2 liberated equal mass of copper equal mass of H. It was 4. Now 1 2 3 4 दबानी first 1 एतिक लिखिलो 2 एतिक लिखिलो 3 एतिक लिखिलो 4 एतिक ହେଲା ना मरी करनी छी फर्स्ट 1 स्टेटमेंट एतिक 4 लिखाई छी लिखिलो 2 नंबर एतिक लिखियो जदी फिगर पर किसी का लिखवालो बहुत भलो जदी न पारला फर्स्ट एतिक लिख सला पर एटा लिख देला 2 नंबर एतिक तापर नंबर दबनी 1 2 दबने फर्स्ट एतिक लिखिलो 1 तापर ला 2 इफ पकड़ो 3 नंबर ला 8 एतिक 4 नंबर एतिक ला करेक्ट एक्सप्लेनेशन हला दिस इज अबाउट फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ दिस इज सेकंड लॉ प्रीवियस में डिस्कस करथिले गुडा फर्स्ट लॉ नेक्स्ट I will solve some problem based on Faraday's law. Eta pachari Faraday's laws we will put the next class we will discuss only the problems. We will discuss only the problems on next class. Hala and eti explanation pacharle Faraday's law of electricity first law explanation second law explanation eti likhibo adi easy likhibo na सेकंड लॉ रो ए पॉइंट फर्स्ट सेकंड पॉइंट एटा तापर थर्ड एटा लिखिबो फोर्थ एटा लिखिबो एति गला सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ रो स्टेटमेंट आउ एक्सप्लेनेशन हला with this Faraday's laws completed I am giving one tricks then this class will be completed. For short question I am giving one tricks we will mention that is bird's eye. Bird's eye 1 coulomb equal to 1 ampere into 1 second. 1 coulomb equal to 1 ampere into 1 second. Second means 1 Faraday. 1 Faraday F है ना Faraday 1 Faraday equal to 96500 coulomb. Very important. This is very important. 1 Faraday 1 F 1 stands for Faraday. 1 Faraday equal to 96500 coulomb. 1 coulomb equal to 1 ampere into 1 second. These are the short questions. And third is W equal to ZIT or it is W equal to E by F into I into T. W equal to ZIT or W equal to E by F into I into T. When we pass 1 Farad of electricity then or when we pass 1 Farad of electricity or 96500 coulomb of electricity, so the electrolytic solution 1 gram equivalent of the substance will be deposited. That part is very important. When we pass 1 Faraday or 96500 coulomb of electricity to the electrolytic solution, it will deposit 1 gram equivalent. It will deposit 1 gram equivalent. 1 gram equivalent of 1 Faraday
will deposit 1 gram equivalent of the substance at the electrode. Simple. When we pass 1 farad or 96500 coulomb of electricity to the electrolytic solution, it will deposit 1 gram equivalent of the substance at the electrode. Clear? Simple. 1 Faraday or 96500 coulomb will deposit 1 gram equivalent of the One Faraday 96500 coulomb will deposit 1 gram equivalent of the substance. That point is very important. A pointer. This is the key concept. This is the key concept. We will use it in problems. 1 Faraday or 96500 coulomb will deposit 1 gram equivalent of the substance. Equivalent weight expressed in gram. Equivalent weight expressed in gram. Clear? So 1 Faraday will deposit 1 gram equivalent, and 1 coulomb equal to 1 ampere into 1 second. 1 Faraday equal to 96500 coulomb. You will put the question 1 Faraday equal to dash 96500 coulomb, and W equal to ZIT or W equal to E by F into I into T. This is clear.